हेलो एवरीवन। सो आज का जो क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है। तो मैं मैक्सिमम इंटीग्रेशन क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ। राइट, तो देखो, है ना, क्वेश्चन कैसे करते हैं ये वाला। सबसे पहले मैंने इसको देखा, जो ये ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 1 माइनस कोस अल्फा साइन एक्स। और यहाँ पे देखो कोस अल्फा साइन एक्स लिखा हुआ है और 1 भी लिखा हुआ है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो कुछ ये दोनों टर्म तो आएंगी आएंगी। यानी कि ये मुझे हिंट दे रहा है कि अंदर मुझे परफेक्ट स्क्वायर टाइप से कुछ बनाना है। तो देखो मैं कैसे बना रहा हूँ। 1 माइनस कोस टू अल्फा, मैं केवल इस स्क्वायर रूट वाले पार्ट को हम केवल सोल्व कर रहे हैं और फिर हम इसको डायरेक्टली लिख लेंगे कि क्या आया, साइन एक्स। राइट, तो ए स्क्वायर तो मेरे पास है और मेरे पास ये भी है। ओके, अब मुझे चाहिए क्या, इनका होल स्क्वायर चाहिए। राइट, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी। तो मुझे इसका स्क्वायर चाहिए। कोस अल्फा साइन एक्स का स्क्वायर मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ओके, एंड cos to alpha sin square x, right? So it is 1 minus cos alpha sin x whole square, and take sin square x common. Okay, so cos 2 alpha minus cos square alpha, right? So cos alpha sin x whole square and sin square x, it will be equal to 2 cos square alpha minus 1 cos square alpha, right? So 1 minus cos alpha sin x square sin square x cos square alpha minus 1, right? So you can write it down. It is 1 minus cos square alpha is sin square alpha. So this will be in minus sin square alpha. So you can write it down, sin square x sin square alpha. Okay. So this is our square root part, right? Okay, इसको तो नोट कर लिया हमने 1। अब मैंने क्या किया कि इसी में से अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ, cos अल्फा sin एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लूँ, तो क्या बचेगा आपका, ब्रैकेट 1 माइनस sin एक्स sin अल्फा 1 माइनस cos अल्फा एंड sin एक्स। ये sin एक्स है यहाँ पे, राइट, एंड होल स्क्वायर। ओके जी, सॉरी, होल स्क्वायर अंदर आएगा, एक मिनट। तो होल स्क्वायर यहाँ पे आएगा और ये ब्रैकेट, दैट इज होल स्क्वायर, राइट। Okay, now, okay, now put this expression in the above equation. So what you will get, so square root of this, what you will get, 1 minus cos alpha and sin x. Okay, 1 minus cos alpha sin x, square root of this. Okay, square root of this. So square root of 1 minus sin alpha sin x, that is sin x, right, upon 1 minus cos alpha sin x whole square. Okay, so square root of this, you will get this. Okay, now, so now come to our question. So cos x dx, the square root part is this, so you will get cos alpha sin x already there, and one is this, so it will be square, right? And the square part, 1 minus sin alpha sin x 1 minus cos alpha sin x whole square. Okay, so this is the integration now. So we change this integration, whole integration, this expression into this expression, right? I hope you got this expression. This is the square root part only. This is the square root part only, which we place
here, right? Okay, now put sine alpha sin x and 1 minus cos alpha sin x is equal to t। तो t का हिंट कैसे लगा, इसको t पुट करना है। देखो यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, तो जब इस तरह का एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप का डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे स्क्वायर बन जाएगा। तो वो इस हिंट को देखते हुए हम काम कर रहे हैं, तो कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो 1 माइनस cos अल्फा sin x, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड sin अल्फा cos x, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 0 cos अल्फा cos x and second is adjacent। ओके, इसको ऐसे ही लिख लिया, राइट। एंड 1 माइनस cos अल्फा sin x होल स्क्वायर dx dt, right? Okay, now simplify it. Let's say sin alpha cos x and sin alpha cos alpha sin x cos x। Okay, this minus minus is plus, so sin alpha cos alpha sin x cos x upon 1 minus cos alpha sin x whole square, that is dx and dt। This part will cancel out, so you will get sin alpha cos x and 1 minus cos alpha sin x whole square dx dt। You can write it down, cos tx and 1 minus cos alpha sin x whole square is equal to dt sin alpha। Okay, okay, now replace it here in this equation। You got this value directly, right? So it will be dt upon sin alpha, so it will be dt upon sin alpha। So sin alpha, let's write it down here, integration 1 minus t square under। So integration of this is very simple, sin inverse t, sin inverse t। What is the value of t? Sin inverse, value of t is sin alpha sin x, sin alpha sin x and 1 minus cos alpha sin x। So this is our integration answer। Okay, so thank you।